I hope you all are fine. So welcome back to ayeshavlog. Today we are going to study about the sentence. Before that, a big sorry from my side that I was not able to upload videos daily because my summer vacation was started and I was out of India, so I was not able to upload videos. When I came back from there, my exams were started. I have to study that. So I was so busy that I was not getting time to upload videos for you all. But from today, I will try to upload videos weekly, not daily, weekly. So we are going to begin with the topic. Before that, please take out your notebook, pen, pencil, whatever you need to write. Open a new page, give a heading, the sentence. Let's move on. Okay, we are going to study about type of sentences today. So whenever we listen the word the sentence, the first question comes in our mind is what a sentence. The first question comes in our mind is what a sentence. Wait. So read this definition. Let's read it. When a bunch of words get together and make sense, that's called a sentence. See, I will tell you in Hindi. You all know what are words? A, B, C, D, E, F, G. Very easy, we all know. So, when these words come together and make perfect sense, like जब बहुत सारे वर्ड्स एक साथ मिलते हैं और कोई सेंस बनाते हैं, मतलब कुछ मतलब बनाते हैं, वो सेंटेंस कहलाते हैं. For example, the boy is going to school. In this, when we read it, we can understand it easily. That the sentence want to say कि वो लड़का स्कूल जा रहा है. So we are able to understand it easily. So that is a sentence. If we were not able to understand it, it was not a sentence. Understood? Perfect. Write the definition, example, and the question in your notebook. Move on. I have made a rough area to make a simple topic to you all understand, which is subject and predicate. Yeah, we have already discussed about it. In that, the subject was same, but there in the place of predicate, we used to know object. So we all know. Those who don't know, for them, when the whole sentence is for a person and the person for the person, like ये पूरी sentence एक इंसान के लिए, वो है रिया, तो हमारी रिया क्या होगी, सब्जेक्ट होगी, और ये पूरा लाइन रिया को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है. So this is predicate. Okay. When a line describes about a person, the person is subject and the describing words that are used, the word that are describing the subject is called predicate. Easy to understand? Yeah, it's easy. So, if you all have written our last class in which we have a study about the subject and object, so don't write it, or if you all haven't wrote it, so wrote down it. Give a heading subject and predicate. Write this and just make like this, Riya subject and the word like P, S. S stand for subject, P stand for predicate. Okay, let's move on. So I have taken a picture of my book from which I actually study. So there I have from that book I am showing you for your example like what are. So in this, let's see the question. Underline the subject in each of these sentences. You all can see this, understand what are it. You all can look this. Neil Armstrong was the first human to set his foot on the moon. So this whole line is describing one person, that is Neil Armstrong. My brother who is standing there is a science teacher. So this whole line is describing my brother. So my brother is a subject. You all can read it, understand it. So this is the exercise which is your homework. You have to write the questions in your notebook and try to solve it. After solving it, you have to check that
Have you understand subject and predicate properly or not? This is your homework. Okay, now we are going to talk the main thing about our topic. Okay, so there are four kind of sentence. Wait, there's a mistake, I haven't wrote it. You all can wrote it. Okay, so kind of sentences, there are four kind of sentences. अब जैसे हमने समझ लिया सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस को भी काइंड में डिवाइड किया गया है, वो भी चार तरह के होते हैं. ठीक है, so let's know what are they. First is assertive sentence, second is interrogative sentence, third is imperative sentence, and fourth is exclamatory sentence. Okay, so let's see. First we are going to talk about assertive sentence. Okay, so let's read the definition. An assertive sentence is a sentence that states a fact, opinion or idea. It simply tells us something. वही we know what a sentence, same thing है. Assertive sentence वो sentence होते हैं जो हमें facts, opinion या idea बताते हैं, और it simply tells us something. ये हमें किसी चीज के बारे में बताते हैं, और हम इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि assertive सेंटेंस की जगह डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिख दे, so nothing to confuse because both are same, both definitions are same. It also ends with full stop, with a stop. We all know what a stop. Easy. Okay, let's move on next. Type of assertive sentence. See, first, sentences are divided into four parts, and in assertive sentence, it is divided into two kinds. Okay, so that kind of this. First is affirmative sentence, second is negative sentence. नेगेटिव सेंटेंस है तो सबको समझ आ रहा है ना, मतलब नेगेटिव से समथिंग बुरा, और असर्टिव मतलब पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब अच्छा, नेगेटिव का मतलब बुरा. सो अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो पॉजिटिव बताते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो नेगेटिव बताते हैं. सो इसके एग्जांपल्स भी पढ़ते हैं. She goes to school every day. तो ये पॉजिटिव है, ये अच्छी बात बोला. She does not like coffee. ये बुरा है. Like नेगेटिव पॉजिटिव, समझ गए? So हर सेंटेंस अगर एग्जाम में आ गया कितने टाइप्स में डिवाइडेड है सेंटेंसेस, 4 टाइप्स में. अफर्मेटिव कितने टाइप्स में डिवाइडेड है? 2 टाइप्स में. And next is our interrogative sentence. So let's wrote this all in your notebooks. I forgot it to mention it. Please wrote this all in your notebook. And whatever I'm gonna teach you after this, wrote it. Okay. Interrogative sentence. A sentence that asks a question. जो सेंटेंस तो सबको पता है सेंटेंस क्या होता है, और जो ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है, लाइक क्वेश्चन पूछने के लिए भी हम बहुत सारे सेंटेंसेस यूज करते हैं ना, वो वाले सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. और ये क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होते हैं, इनकी एंडिंग क्वेश्चन मार्क होती है. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है क्वेश्चन मार्क. तो अब इसके एग्जांपल देखते हैं. व्हाट इज योर नेम, आर यू कमिंग टू स्कूल टुडे, वेयर डू यू लिव. सो ये सब इंटरोगेटिव सेंटेंस हुए. तो जैसे there's a girl and I am asking to her, what is your name? So this is a interrogative sentence. Okay, let's move on to the next imperative sentence. Okay, so wrote this in your notebook too. Imperative sentence, let's read its definition too. A sentence that gives us a command, request or advice. ऐसा सेंटेंस जो हमें कोई कमांड, हुक्म या रिक्वेस्ट या फिर विनती या फिर एडवाइस, सलाह,
ये ऐसा सेंटेंस जो हमें ये 3 चीज देती है वो इम्पेरेटिव कहलाती है, और वो फुल स्टॉप के साथ खत्म होता है। और समटाइम्स exclamatory mark. Now next we will know what is exclamation mark, but तो समझ आया इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो ऐसे सेंटेंस जो हमें कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस देते हैं। एक बार एग्जांपल की तरफ भी देख लेते हैं। प्लीज क्लोज द डोर, ये हम किसी से विनती कर रहे हैं ना कि प्लीज डोर बंद कर दो, सो इट इज अ रिक्वेस्ट। व्हेनेवर इन एग्जाम इट कम्स लाइक मेंशन इफ द सेंटेंस व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज, ठीक है। तो अगर कोई सेंटेंस इम्पेरेटिव है और अगर वो रिक्वेस्ट है तो वहां पे इम्पेरेटिव सेंटेंस ब्रैकेट में रिक्वेस्ट डालना जरूरी होता है। यू शुड ऑलवेज डू दैट। डू योर होमवर्क, ये कमांड है। बी केयरफुल, वार्निंग, एडवाइस, दोनों हो सकता है। हम ऐसे वार्निंग भी देते हैं ना, अपना होमवर्क पूरा करो, ठीक है, और एक तरह से हम एडवाइस भी देते हैं। बी केयरफुल है ना, तो हम एक तरफ से वार्निंग देते हैं ना, अगली बार से संभल के रहना, बी केयरफुल फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। और एक एडवाइस भी हो सकता है, बी केयरफुल फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। हम उसे एडवाइस दे रहे हैं ना कि अगली बार से तुम सतर्क रहना। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। So what are exclamatory sentences? Let's read it. Okay. So yeah. A sentence that shows strong feeling like joy, angry, surprise, etc. ends with an exclamation mark. सारे sentences ये मैं आपको बता, ऐसा सेंटेंस जो हमें किसी की स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताता है, जैसे कि वो एंग्री है, गुस्सा है, खुश है, सरप्राइज है, जो भी, वो हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ही खत्म होते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ खत्म हुआ। जैसे ये लड़की ड्रेस पहनी है तो इसे पॉइंट आउट कर रहा है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज। नेक्स्ट, आई कांट बिलीव दिस, मैं ये मान ही नहीं सकता, ये सरप्राइज हुआ उसके लिए। अगर वो जैसे कोई टेस्ट में पास हो गया, उसका फ्रेंड उसे बताता है तो वो सरप्राइज हो गया। तो इसमें, और कभी कभी हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ना कुछ ऐसे वर्ड्स भी यूज करते हैं जो फीलिंग शो करती है, लाइक हुर्रे, आउच, बहुत कुछ हो सकता है। आई हैव रिटन ओनली हुर्रे, हुर्रे वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। सो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट एक्सक्लेमेशन मार्क? I want to tell you one thing more before we move on. We know that sentences are divided into 4 parts, but always remember this. They also end with a specific thing. Like it ends with a full stop. Yeah. Oh, it's not a full stop. Okay. Full stop. It ends with a question mark. What? Question mark. It ends with a same full stop, exclamation mark. Okay, they also end with some marks we have to. Okay, I have prepared some quiz for you all, so let's have a look through it and let's know how much we have understand. You all have understand. Which of the following is an example of an affirmative assertive sentence? Affirmative, देखिए इसमें बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल है affirmative assertive का सेंटेंस। तो आप लोग अपना देख लीजिए। ओके, सो देखिए affirmative हमें पता है क्या है, उसका assertive सेंटेंस, ठीक है। तो he does not enjoy running, ये नेगेटिव है। affirmative पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव है। she visits the library weekly, she rarely eats breakfast, तो मेरे लिए तो सेकंड है। let's check, submit, wait, are we not able to submit it? There is some issue, but the answer is she visits the library weekly. Okay, which sentence is an exclamatory sentence? Please click हो जा। Okay, इनमें से कौन सा सेंटेंस है? तो देखो, एक तो होता है कि हम लास्ट के एक्सक्लेमेशन मार्क से
पहचान ले आप वर्ड से, एक होता है कि ड्रेस. सो शी इज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ये assertive में affirmative में चला गया. आई बिलीव वी कैन विन दिस मैच, ये भी assertive में चला गया, सॉरी. वाओ दैट व्हाट्स एन अमेजिंग अचीवमेंट, ये एंड हुआ एक्सक्लेमेशन मार्क से और साथ में. ओके, वी आर करेक्ट. I don't know what's the problem that sorry. What's the problem that we are not able to submit this one? Okay, leave it. Which of the following is an example of affirmative sentence? इसमें से कौन सा एक example है affirmative sentence? Imperative sentence. The door is closed. Please close the door. Why is the door open? Please close the door is the example. There's some issue. Okay, we all know the answer is this. Second one. Which of the following is an interrogative sentence? Of course, we can guess with the exclamation, like question mark. It's correct. These twos are also correct, but I'm not able to submit it. If I would be, so I can show you all. Otherwise, leave it. So we are ended with this topic. Congratulations. Thank you for watching it. If you find this video helpful, so please like and subscribe so you will get it. Update about my new videos. So and you can watch it. So for today, this much. Bye bye. Take care, and we will be coming with a new video. We will coming with a new video next week. Bye.